Hi, all. I welcome you all again to this amazing session of digital marketing, where we are going to learn about the real time consumer behaviors and how the solution from the digital marketing has been solved on the basis of the traditional marketing that was previously practiced. So, this is a session done by Rocket Genie, and we are here at Model 3 and part final ones. So, yes, this is the impact of digital disruptions on the traditional marketing strategies and the decline of traditional market. This is the last part that we're going to cover about the consumer behavior. And this is the part which specifically aligns a digital marketing person to understand that why is it important to actually learn about consumer behavior and how is it going to impact a brand if we as a person are working for its beneficial. Ultimately, there are two things. Either you are going to end up creating a brand in the market, or either you're going to work for a brand that is already existing in the market. So, yes, how to learn about that and what were the traditional ways that the company was actually doing the consumer strategies, and now what is the impact when we have shifted to the digital era. Combining to this part that it is important to understand the consumer behavior first, until we are trying to understand that why is it important and why are we working for it, then only we can understand the key roles that what digital marketing as a thing has done on an impact with the consumer part, right? Firstly, it has provided a better marketing and communications in the digital part. Talking about this, see, you all use your phones, you all use your tablets, laptop, desktop, anything, right? When you're having your conversations, so is it easy to cross check with your friends that where are you going to party today, or where are going to visit today, in which temple are you going to have your puja today, or if you're going to book a banquet or something like that, so where is it? The comparative price, the communications is really easy online, right? You can just call anyone by the help of GMB that they've listed down. You can call, say the directions, the websites, the Google Maps are way frequent and way regularly used by the people. So, yes, this is how better communication is helping a person to identify their behavior. Now, when a person is trying to elevate only to one segment of brand very regularly, just in the grocery parts, we have Big Bazaars, V Mart, Raj Mandir. So you see, there are multiple people coming up to it. Sometimes people just call up randomly and ask them, "Ki, do you have this product and is it on sale?" And they can genuinely ask two, three, four brands together on simultaneously calls, right? And after analyzing कि कौन से brand में if Rajmandar is giving 15% on some grocery and the other big bazaar is giving just 10%. So they might end up visiting the Raj Mandir, right? Now it is again very crucial part to understand कि अगर राज मंदिर में वो विजिट कर रहे हैं, so राज मंदिर is going to do push factor to them, right? Push factor के बाद what happens? They are going to either do WhatsApp marketing, either do email marketing, और जब billing होती है, they have a chance to get the number, email, data, name, everything of that customer, right? Where he even stays, they can ask like randomly for creating a relationship. So that is how better marketing and communication is helping somewhere or something to establish this part, right? If you understand about the improved consumer retention, so when a brand is trying to play a part that they are trying to give their own services and they're trying to see कि growth हो रहा है in the production, growth हो रहा है in the more customer coming. Let me give you an example of the brand Handa Bangles. It is a very small brand when it established into the past, and it was most of the related to the women goals, wears, and all of that part. ठीक है जो जो भी ज्वेलरी से कवर होता है, all of that. अब हांडा बैंगल्स के पास they started doing influencer marketing. They were not doing any push factors. They were not doing any traditional way of marketing. They were more into the digital part, जिसमें वो influence को ज़्यादा से ज़्यादा pull करते थे. See, in jewelry industry, when we come up, there is some parts in the premium segment जहाँ पे websites असर करती हैं, but to the major segment क्या होता है? Only influencers and other marketing strategies or events, है ना? ये सब ज़्यादा influence करते हैं. Suppose if you know about the IT sector, Sarte. So Sarte is a event, ठीक है? जहाँ पे all types of new freelancers or new brands or new ideas of people come up on the board and they have their own decks and they present the idea. उस idea में either they are trying to get some interns, either they're trying to get some budget, either they're trying to get some sponsorships. So this is how they are, listing out their brands. Same for the jewelries also. There are certain events
जहाँ पे दे गो, दे विजिट एंड दे ट्राई टू एनालाइज कि ठीक है इधर हम सेल्स कैसे करें। इधर दे पुट अप ए मॉडल और उसको पूरा एकदम सजा देंगे सोने से, और एनी यूएसपी दैट दे हैव, अगर दे आर on basis of crystals, on the basis of gems or something, so they're going to highlight it that way कि वो बहुत feasible और बहुत attractive लगेगा, so that a person can visit them and end up purchasing it based on their own USPs, या तो making charge कम होगा something। so ये whole system क्या दिखा रहा है, ये होल सिस्टम बता रहा है कि अगर आप कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर रहे हो इवन फॉर द सेकेंड परचेज, देन यू आर गोइंग टू हैव अ गुड ग्रोथ एंड ऑप्टिमाइजेशन। फिर क्या होता है, रिटेंशन, मतलब जो डिक्लाइनमेंट होती है ना वो एकदम खत्म हो जाएगी। सो अल्टीमेटली इंप्रूविंग द रिटेंशन मीन्स टू हैव एन ऑप्टिमाइजेशन इन द ट्रैफिक या डबल कस्टमर विजिट्स, ठीक है। Now, when a customer is increasing at your part and you're having a good customer base, so what happens that you end up getting customer loyalties. Now, customer loyalties के लिए there are different brands running different programs as well. Customer loyalties के लिए we always have coupon codes, we always have the same data to fetch on WhatsApp, email, एक push factor होता है। कस्टमर लॉयल्टी, जब तक आप उस कस्टमर को बेनिफिट दे रहे हो, दैट कस्टमर इज ऑलवेज अलाइन्ड विद यू, ठीक है। हमेशा इस पार्ट को समझना। इफ यू आर नॉट, सी, इवन इन मटेरियल वर्ल्ड व्हाट हैपेंस, people are reliable on benefits. If you are giving benefit to someone, or someone is really getting benefited out of a sense gratification, out of any monetary values, or out of in terms of business, life, love relations, family, so what happens, they stay. Else, if people are not getting benefited, they have a tendency to leave it. This is a material Kalyug tendency. ठीक है? This runs on the business aspects too. Suppose if a customer is not getting additional discounts from you, if customer is not getting good behavior from your client or staff, if customer is not getting a good service, so they can end up leaving it. ठीक है? Relation भी, आपका personal relation जो आपने develop करा है with that customer, even your work is from online. There are some premium brands that are only working from online. But क्या होता है, they try to call their customers, they try to hand out some kitty parties or some events जहाँ पे सब offline मिलते हैं। And when it happens, so what is it? It is all about कि आप उस customer को कैसे relationship में bound कर रहे हो। अब रिलेशनशिप भी कुछ हद तक ही लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है। इट कैन कवर अप, क्योंकि अल्टीमेटली द थिंग इज यू आर नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ देयर फैमिली और अ परमानेंट पर्सन इन देयर फैमिली। सो वो ब्रांड लीव कर सकते हैं ड्यू टू दैट कंस्ट्रेंट, ठीक है। लेकिन when you're increasing the customer loyalty to a certain aspect and you're getting benefit out of it, then your purchase will increase because recommendations आते हैं हमेशा, है ना। either on recommendations you can give up the customer कि अच्छा आप ये benefit लो, आप इस तरीके से end up करो, है ना, या फिर आप और customers लेके आओगे, you will get some discount on that. So what happens, you have better inventory to make for them, right? नाउ जब इन्वेंट्री बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली इट मीन्स कि आपका सेल भी बढ़ रहा है, क्योंकि डिमांड ज्यादा है कस्टमर की तरफ से। आपका इन्वेंट्री बढ़ेगा, इन्वेंट्री मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा तो सेल्स भी बढ़ेगा। सेल्स बढ़ेगा, सो द बेस्ट पार्ट ऑफ द डिजिटल मार्केटर एट दैट पॉइंट ऑफ सॉर्ट ऑफ टाइम इज टू रन अबाउट द एनालिटिक्स। एनालिटिक्स को पढ़ना है, अपने कॉम्पिटिटर्स को रिसर्च करते रहना है, व्हाट इज बेटर दे आर डूइंग। क्योंकि इफ यू स्टॉप स्टडिंग अबाउट योर कॉम्पिटिटर्स, there might be a chance that you end up getting stuck in one kind of trend, and trends and algorithm बहुत जल्दी change होते हैं। if you're trying to know ना कि competitors क्या best कर रहे हैं, so there is one app called ad libraries. it is sponsored by Meta, जिसमें all of the competitors जो भी वो reels चला रहे हैं, videos चला रहे हैं, कितने टाइम से चलाया है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पे चला रहे हैं, कितने फ्रीक्वेंसीज हैं उसका, एवरीथिंग इज विजिबल। यू कैन इवन चेक आउट द एंड पेजेस दैट दे हैव मेंशन और द लैंडिंग पेजेस या वेबसाइट्स उनकी कौन कौन सी है। बट there is one con of that you cannot view the budget that they're putting or the strategic or kind of camping strategy that they're pulling. But yes, if you're an expert and you know how meta ads work, so you know कि leads है तो फिर CTA बटन आएगा, अगर फॉर्म वाला है तो अलग कुछ टेम्पलेट रहेगा, and there are fixed things running in those campaigns. If you know about the templates, meta ads, buttons and everything, so you can identify कि अच्छा ठीक है इधर book now बटन का है या CTA इधर लगा है, मतलब ये OBA कैंपिंग है, और मतलब इसने मेटा का 6A+B टेस्टिंग लगाया है, या फिर इसने इधर ये करा है। सो एवरीथिंग इज वेरी
क्रूशल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। और ये सब कैसे समझ आएगा? इफ यू हैव द पार्ट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, ओके। Next, let's learn about ki what are the parts and why it is converted from traditional to digital one. So, influences on online reviews and social proof. See, back days, what happens that people do have big go downs, big manufacturing units, everything was offline. ठीक है? अब offline basis पे not all customers are going to give you the reviews. If you ask someone, just go and ask, ये मिठाई का दुकान कैसा है? They will end up saying, हाँ, अच्छा है. But your taste, your preferences, and your sweet styling is different from what he is getting. There are three types of things that makes a difference. Can be because of the purchase behavior, that he is not concerned about the costing and you are more of budget friendly. Second can be about the taste, that he just ends up buying it for any other occasion and you are buying it for a special occasion. So you might have a different particular taste कि नहीं, इसका इस दुकान में मीठा बहुत डलता है and you are not, very favorable to it. You end up getting another taste from another brand and that suits you enough. So yes, you'll end up buying from there. And the third reason is about the interest. That उसका interest है, maybe उसके कोई और relative ने suggest करा है, or he is coming up due to some other factor, and you are ending up purchasing from there due to that person. You do not have any concern कि अच्छा ठीक है क्या healthy है, कैसे बनाते हैं, क्या process है. You're not there. So you are trusting on the basis of any genuine person या फिर कुछ भी random person that he is saying. But that was the traditional aspect. In the digital aspects of advertisements, what happened? The primary source is about the trust. And trust kaise badega? So it is all about the reviews, the GMP testimonies, social media proofs, everything that your business is doing, you need to, at least convert it to the customers and they must be very visible. कि अच्छा ठीक है, what is the next point that you're covering? Okay. This will ultimately increase the trust. Now, when we talk about the positive reviews and ratings, that is a very good point. But when we talk about the potential customers that are not buying from you, this proves that अगर मानो कि कोई कस्टमर है, आपका वेबसाइट है, इन सिंपल वर्ड्स आई एम एक्सप्लेनिंग, ठीक है, वेबसाइट है, ही कम्स अप, उसने ऐड टू कार्ट करा, बट ही डिड नॉट पे फॉर दैट. There are multiple reasons. Either your payment gateway is not working, the very common reason that websites do analyze. The second part is either your review for the product was not much good and the customer have not, proven his mind to run for that only. Third product can be either किसी और को उसने दिखाया and he suggested, अरे इससे cheap and better quality का I have bought it, so you come from there. Now, what was the lacking overall? कि हम उसको trust नहीं build कर पाए that yes, this is the worth every penny trust. Now, अगर trust नहीं है, so what the brand must add up to? Brand must do more UGC content. Brand must be very product primitive pages. Start making that, है ना? अपने सोशल मीडिया पे काम करना है एंड एवरीथिंग यू हैव टू प्रूव इट आउट. आपको कस्टमर एंड इन्फ्लुएंसर्स के ट्रैफिक को रीच आउट करना है. Then only it will be beneficial, right? Next point is about the omni-channel marketing. So brands now must provide a seamless experience across all channels. Omni-channel means multiple channel working, ठीक है? Whether online, in-store or throughout the mobile apps. Omni-channel marketing ensures the customer have a consistent and unified experience regardless of the medium they use to interact with the brand. So this is all more common to the e-commerce part. देखो e-commerce में brands do have listing on Amazon, Ajio, नाइका, शॉपिफाई, उनका खुद का वेबसाइट, जीएमबी, गूगल मर्चेंडाइजिंग, classified ads, and much other things. Even if we talk about the campaigns on the Meta. So ये सब क्या कर रहे हैं? These all channels are ultimately promoting the sale of a brand, right? और प्रोडक्ट को ही तो शो कर रहे हैं ना. प्रोडक्ट शो होगा या सर्विस शो होगा, then only the customer will end up buying it. So if it is through the desktop, तो वो कैसा वर्किंग है? इफ इट इज थ्रू द एप्लीकेशन, तो वो सीमलेस है या नहीं? ऑल दीज चैनल्स मस्ट बी वेरी क्विक इनफ, मस्ट बी वेरी फ्रीक्वेंट इनफ टू वर्क ऑन, एंड इनका एक्सपीरियंस बहुत सॉफ्ट इंटरैक्टिव होना चाहिए. द पर्सन मस्ट ऑन फर्स्ट नोट हैव ए कॉन्टैक्ट, ठीक है,
ईमेल फेल होने का चांस होना चाहिए, रिव्यू रिटर्न की पॉलिसीज बहुत मैंडेटरी होती हैं, ये सब होना चाहिए। एवरी डिटेल मस्ट बी वेरी अलाइन्ड, वरना आरटीओ का आने का बहुत वो रहता है, ठीक है? रिटर्न्स आने का बहुत वो रहता है। एंड रिटर्न्स के चार्जेस भी, अगर ब्रांड पे कर रहा है, प्रोडक्ट भी वापस आ रहा है और उसका बॉक्स हैम्पर हो गया, सो इट इज अ डबल कॉस्टिंग फॉर अ ब्रांड टू बेयर। दिस इज व्हाई ओमनी चैनल्स मस्ट हैव अ वेरी रेगुलर वर्किंग ऑन इट, ठीक है? वो वर्किंग डिफाइन होती है ऑन द बेसिस ऑफ हाउ योर प्रोडक्टिविटी इज देयर, ऑन हाउ योर कंसिस्टेंसी इज देयर। अब अगर मानो कि नया ब्रांड है एंड यू आर डूइंग वन पोस्ट वन डे, डू यू थिंक इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट इट? सालों साल लग जाएंगे उसको टू कम अप विद द ऑर्गेनिक ट्रैफिक। अगर आप इंस्टाग्राम चैनल बिल्ड कर रहे हो, या लिंक्डइन चैनल है, या टेलीग्राम चैनल है, सो ऑल ऑफ दीज चैनल्स आर व्हाट, दे आर रिलेटेड टू दी वर्किंग ऑफ कंसिस्टेंसी। आपका 2 by 3 पोस्ट या 3 post 1 reel, ऐसा कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजीज बेस्ड ऑन दैट ब्रांड must be going on. Unless and until you are not very specific about that routine, you cannot, target the audience. It is very difficult to get it. Next point comes up is the eligibility in marketing. Eligibility means about the change and the opportunities or the trends that you cannot miss. Suppose if digital trends are changing rapidly and business is just aligned to one trend, ठीक है? आपका बिजनेस बोल रहा है नहीं नहीं, बहुत पहले हम हैशटैग्स देखते थे यूज करते हुए, अभी भी हैशटैग्स यूज करो ऑन इंस्टाग्राम, दिस विल ब्रिंग मोर रील्स, मोर व्यूज एंड मोर प्रोडक्टिविटी। नॉट एट ऑल। Listen to my words very carefully. If you are a startup brand and you're building a startup brand, you only have to put 20 to 15 keywords, that too जो भी आपके hashtags, that too जो आपकी keywords से related है. You cannot just put OOTD everywhere. You cannot just put the tech digital everywhere, or you cannot just put any random keyword. That keyword must be related to your, that hashtag must be related to your keyword, ठीक है? And इंस्टाग्राम पे भी ऐसे ही होता है, टू योर सरप्राइज। और वो कैसे होता है? इन इंस्टाग्राम व्हेन यू सी दैट देयर आर मल्टीपल बायो टू फिल, है ना, उस बायो में यू हैव टू फिल इन सम कीवर्ड दैट इज रिलेटेड टू योर बिजनेस। जैसे इफ इट इज रिलेटेड टू क्लोथिंग, तो ऑप्शन आता है, यू फिल दी क्लोथिंग पार्ट, है ना, टॉप में ऑप्शन आता है टू क्रिएट इट एज अ बिजनेस या क्रिएटर अकाउंट। बट बिलो ऑल्सो यू नीड टू एड सम थिंग इन योर टाइटल ऑल्सो। जैसे LH है या फिर शॉपर स्टॉप है, तो शॉपर स्टॉप डॉट करके किड्स वेयर, या शॉपर स्टॉप वुमेन वेयर, है ना। अगर कोई ब्रांड है रिलेटेड टू डायमंड लेडी, सो डायमंड लेडी डॉट वुमेन वेयर, या उसके किसी बायो में कोई कीवर्ड होना चाहिए रिलेटेड टू वेस्टर्न वुमेन वेयर। सो ऑल ऑफ दीज कीवर्ड्स व्हाट दे डू, दे ट्राई टू हेल्प अप ए ब्रांड अंडरस्टैंडिंग कि उसका सब टॉपिक क्या है, एंड दैट पर्सन ऑन द इंस्टाग्राम अगर वो सर्च कर रहा है, so your brand having that keyword in your bio can rank up. This is how it actually works, ठीक है? Nobody in this world is going to think कि अरे मानो कि ब्लू डोर से कोई ब्रांड है, सो वो एग्जिस्ट करेगा, किसी को कोई आइडिया ही नहीं होगा। लेकिन अगर ब्लू डोर के आगे आपने लिख दिया रिजॉर्ट्स, सो समवन इज टाइपिंग अगर रिजॉर्ट्स ना, सो समवेयर और द अदर आपका विजिबिलिटी बहुत अच्छा है, आपका ट्रैफिक एंगेजमेंट अच्छा है, इट विल बी विजिबल ऑन इंस्टाग्राम एट द टॉप नोट्स, ठीक है? Regarding this, there are some case studies also that we are going to discuss, ठीक है, जो सक्सेसफुल थे ऑन द बेसिस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, एंड दे आर ऑल्सो बेस्ड ऑन द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। देखो, नाइकी सोशल मीडिया एंगेजमेंट एंड कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम्स, वी ऑल आर वेरी वेल अवेयर कि नाइकी इज वेरी स्पेसिफिक अबाउट इट्स कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम्स। वो बहुत ज्यादा इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करता है, वो एप्लीकेशन पे स्पेशल डिस्काउंट्स देता है, वो अपना कम्युनिटी बिल्ड कर रहा है बेसिकली। देखो, नाइकी ने कभी भी कस्टमर डाटा को डायरेक्ट सेगमेंट नहीं करा है। नाइकी ने क्या करा है, अपने कस्टमर्स को सोशल मीडिया के थ्रू अपने प्लेटफॉर्म्स पे कन्वर्ट करा है। जब वो कन्वर्जन हुआ है ना, तो उन प्लेटफॉर्म्स पे एंगेजमेंट बढ़ी है। जैसे जैसे बड़ी है, वैसे वैसे उसने अपने एप्लीकेशंस को भी प्ले स्टोर से, iOS से प्रमोट करा है। जब उनको उसने प्रमोट करा, व्हाट हैपेंस, कन्वर्जन हुआ, ठीक है, फ्रॉम द सोशल मीडिया टू एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे जाने के लिए देयर वर रजिस्ट्रेशंस डन। रजिस्ट्रेशन में क्या मिला? कस्टमर डाटा। नाउ यू गॉट द पॉइंट दैट नाइकी वाज एस्टैब्लिशिंग, ही वाज नॉट एस्टैब्लिशिंग द कस्टमर डाटा एट द प्रायोरिटी, लेकिन सॉफ्ट लॉन्च में ही वाज अल्टीमेटली गेटिंग द कस्टमर डाटा। जब नाइकी के कोई प्रोडक्ट ले या ना ले, बट ही इज यूजिंग द एप्लीकेशन, सो एप्लीकेशन पे दे आर प्रमोटिंग फिटनेस, योगा, more shoes, collections, collaborations,
and they are putting up their platforms like Instagram का दिखाया, Twitter का दिखाया, Facebook का if they are showing. So all of these are what promoting about the Nike customer loyalty program. Now, along with this, जो भी उधर essential हो रहा है, it is also promoted on the social media. See, on the bike industry, let me tell you, रॉयल एनफील्ड डज दिस अ लॉट. अगर आप रॉयल एनफील्ड का कस्टमर या इंस्टाग्राम पेज देखोगे, सो व्हाट इट इज ऑल अबाउट द कोलैबोरेशंस की पोस्ट जो उधर है. रॉयल एनफील्ड माइट पोस्ट 10 out of 30 इमेजेस या फिर रील्स इन इट्स ओन पेज इन अ मंथ. एंड सबसे ज्यादा क्या होता है, किसी और का इमेज होता है, या तो कोई पर्सन है जिसने रॉयल एनफील्ड के साथ पिक्चर खिंचाया है, या रेड बुल करता है मोस्ट ऑफ दिस. ठीक है, एंड दे आर टैगिंग इट और दे आर कोलैबोरेटिंग. सो एंड अप क्या हो रहा है, द रॉयल एनफील्ड इज ट्राइंग टू प्रमोट द पर्सन प्लेटफॉर्म. उधर से भी ट्रैफिक आ रहा है. रॉयल एनफील्ड इज ऑल्सो प्रमोटिंग द कस्टमर लॉयल्टी. दे आर शोइंग कि देखो, एक कस्टमर लॉयल है हमारे लिए एंड ही इज डूइंग ऑल ऑफ दैट. ठीक है, सो ये सब क्या होता है, दिस इज engaging the customers somewhere or the other to purchase from the brand. And the next, when we come up to this, it is again the Apple omni-channel strategy. Apple omni-channel strategy is more integrated on its online and physical stores to be seamless. देखो, Apple is promoting its more and more working related to the promotion of products on the online segment more than the offline. इसलिए अगर आप उनके वॉचेस, उनके चैनल्स या उनका कुछ भी प्लेटफॉर्म देखोगे, दे आर प्रमोटिंग व्हाट, दे आर प्रमोटिंग द प्रोडक्ट. एंड व्हाइल प्रमोटिंग द प्रोडक्ट ऑनलाइन, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर ट्राइंग टू एंगेज अ बिगर मार्केट. ठीक है, इधर दे ट्राइंग टू कवर अप समथिंग, किसी और ब्रांड्स के साथ कोलैब, या फिर किसी लिए, मतलब ऐसे भी नहीं कि किसी और ब्रांड के साथ. इधर दैट ब्रांड इज प्रोवाइडिंग देम द चार्जर, ईयरफोन और समथिंग और द अदर एप्स. ठीक है, तो व्हाट इज इट, इट इज मोर अबाउट द creating a store of brands together जिसमें Apple is the supreme, and this connectivity marketing is trying to create the experience of the consumers. अगर मानो कि someone at the time की chargers, कोई brand for example X brand था जिसने Apple को support करा in manufacturing the charger units, ठीक है, अब provide करा, but people are not very satisfied. Some other brand came up with a wireless charging for Apples. तो उस ब्रांड को अगर पीपल आर लाइकिंग मोर, या मतलब उस प्रोडक्ट पीपल आर लाइकिंग मोर, सो एप्पल इज गोइंग टू कंटिन्यू हिज वर्किंग एक्सपीरियंस या शॉपिंग कंसिस्टेंसी बेस्ड ऑन दैट ब्रांड, नॉट फॉर द प्रीवियस वन. ठीक है, सो एप्पल इज अगेन अ ओमनी चैनल एंड इसकी स्ट्रेटेजीज आर वे डिफरेंट, एंड इन ऑनलाइन मोड्स ऑल्सो दे आर प्रमोटिंग द प्रोडक्ट सर्विसेज बेस्ड ऑन वट एवर दे आर ट्राइंग टू एंगेज द पीपल, राइट. एंगेजमेंट जहाँ पे ज्यादा है, या ब्राउजिंग जहाँ पे जिस प्रोडक्ट पे ज्यादा है, they are creating a multiple version 2, version 3 related to all of that. Now, understanding the future trends in consumer behavior in digital marketing tells about how specifications are, कि क्या ट्रेंडिंग रहने वाला है. अब मानो कि अगर ट्रेंड सेटर है, बट द बिहेवियर इज नॉट अंडरस्टूड बाय एनी ब्रांड, सो दे आर गोइंग टू लैक अल्टीमेटली, राइट. सो वी हैव a graph for it here. First is to you have to analyze the प्रॉब्लम. ठीक है, कि प्रॉब्लम क्या है. व्हेन यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ ब्रांड, व्हाट हैपेंस, ब्रांड इज अ सोल्यूशन अल्टीमेटली. इफ यू आर क्रिएटिंग अ फुटवेयर फॉर एग्जांपल, that means you're trying to solve the problem of a person who needs to work smoothly, or who needs to shine in an event, or who needs it for the party, something unique. So footwear is for that solution. Now footwear में you need to gather the information कि आपको कौन से टारगेट के लिए या कौन से ऑडियंस के लिए जाना है. इवन इन मेटा देयर आर 3 पार्ट्स: बिहेवियर, इंटरेस्ट एंड ऑडियंस, राइट. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस. सो इंटरेस्ट, जब आपको पता है कि आपको मतलब स्पेसिफिकली उस के लिए बनाना है या फुटवेयर्स के लिए बनाना है, ठीक है, वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ फुटवेयर ओवर है. फिर उसके बाद आप उसका बिहेवियर देखोगे कि बिहेवियर में क्या वो इतना फीसिबल है, क्या इतना मार्केट है उसका, सब चीज. एंड फॉर द ऑडियंस यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि कौन से ऑडियंस के लिए क्रिएटिंग, इधर इट इज मेन, वुमेन, या फिर बाटा की तरह सब चीज बना रहे हो, रिलैक्सो की तरह सब चीज बना रहे हो. लेकिन बनाने के बाद भी, और प्रमोटिंग वन थिंग, बाटा एंड रिलैक्सो और मोर ओवर दी सेम ब्रांड्स एंड सेम प्रोडक्शंस. लेकिन योर रिलैक्सो इज मोर ऑफ प्रमोटिंग द स्लीपर्स, कंफर्ट स्लीपर्स, एंड बाटा इज मोर ओवर प्रमोटिंग अ रिलायबल मटेरियल. ठीक है, प्रोडक्ट मटेरियल की जो भी आप यूज कर रहे हो, इट्स वेरी गुड इन लाइक लॉन्ग यूज, ऐसा. ठीक है,
Now, information के बाद, after you're segmenting कि you're catering for which audience, men, women, या whatever it is, then what you'll do, you will start understanding कि if it is for the party, if it's for the business, if it's for any other function fest, or if it's for any other regional event, traditional wears, or whatever it is. So उस information को प्राइस करोगे catering to the audience या कौन से culture से आप उस चीज को evaluate कर रहे हो, right? You cannot promote just a Indian slipper to the Italian market, and you cannot promote a complete Italian leather suit to the Indian market. Not everybody, not every culture accepts it to the same level. Even if you're introducing Korean fashion, if you're introducing any other segment, is it that much adaptable in the Indian culture? क्या वो cultivate हो पाएगा as per the trends? So everything has to be very seamlessly informed before you start your manufacturing. And always have a plan B. This is why we tell you at the steps key evaluations of alternatives. If you're trying to evaluate key, I'm going to go with the Hawaii slippers or relaxing slippers. Okay, you're promoting it. But promotioning into Indian market agar nahi chala, what is the second market you're going to like speak it out? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हो गया, यूनियंस बन गए, you have your stock with you. And अब आपको उसको निकालना है. There are many brands in Asian market जो इस चीज पे struggle करते हैं. They end up creating the furnitures, they end up creating huge luggage trunks, they end up creating lots of scenarios. लेकिन क्या होता है? They are not very evaluating the market कि उसका plan B क्या होगा या वो strategies कैसे plan B पे shift करेंगे. And if you're trying to analyze all of this, so purchase decisions, उसका pricing, उसका profits कितना रखोगे, क्या उसकी costing है, कितना making charge रखोगे, right? Everything has to be very seamless. Now purchase. And when the purchase is done, so post purchase के बाद, what is your service to the customer? अब आजकल जैसे वो e-rickshaws and batteries and electronic scooters and all हैं. सो ये क्या है? इनका परचेज है, मार्केटिंग है, अल्टरनेटिव्स भी, एवरीथिंग इज देयर। इंफॉर्मेशन भी ठीक है कि किसी को अगर विदाउट चालान वाला भी चाहिए, सो दे आर द पार्ट्स। बट पोस्ट सर्विस, their services are really bad. This is why these products end up standing everywhere without any reliable source or service for the next decisions. And apart of this, we can see further different points also, like the rise of the AI and virtual assistants. AI and machinery learning will continue to drive the personalized marketing and offering a hype target experience. Virtual assistants and chatbots will become even more integrated into the consumer journey, from making purchase to the consumer services. To a surprise in China, once there was a hotel and I was checking it out. And what happened that someone ordered a tea at night. Okay, they ordered maybe some Indian food or some tea. So what happened? There was a robot standing. This is back in 2010, right? And we are just in here 2025. So in China, they were already having offline services related to the robots. Now, don't you think that somewhere or the other they are going to excel in the online platforms also if they are having robots? AI is common for them, Gemini is common for them, ChatGPT is really common for them. And who is not doing any job? If I tell my phone that Alexa, you need to perform this task or book a flight for me, she can definitely do it in just a minute. And if I let her know that मेरे chat histories में या मेरे purchase histories में it is a discounted one of जो भी intellectual या integrations है as per my searches, so she will book a flight for me in that sense, right? So everything is trying to go to a digital part. अब जब targeting ही online या AI के through हो रही है, so AI is integrated or supported by whom? By the Google, right? जब गूगल पे सपोर्ट हो रहा है, इट मीन्स समवेयर और द अदर योर वेबसाइट मस्ट बी वेरी विजिबल ऑन द गूगल. इफ इट इज नॉट विजिबल, देयर आर टू रीजंस. ईदर योर कीवर्ड इज नॉट वेरी गुड, कीवर्ड हो भी गया, सब चीज आपने एकदम ऑन द बेस्ट एसईओ पार्ट सब कर लिया, बट योर इंडेक्सिंग इज नॉट डन. सो व्हाट हैपेंस ड्यू टू द इंडेक्सिंग, वो कीवर्ड वाला मैच खाए ही गए नहीं. गूगल विल नॉट एनालाइज कि अच्छा ठीक है इसने कीवर्ड फिल इन करा है. इट इज लाइक आपने फॉर्म भर दिया है बट फॉर्म को आपने सबमिट नहीं करा है. सो व्हाट हैपेंस इफ यू हैव नॉट सबमिटेड योर एग्जाम पेपर और योर फॉर्म, डू यू think that you're eligible enough to qualify? No, even if you've written all of the correct answers. Right, same goes with the
इंटरनेट ऑल्सो। अगर आपने अपने सामरश में सब चीज में कीवर्ड फिटिंग कर लिया है, यू हैव गॉन थ्रू ऑल ऑफ द कॉम्पिटिटर्स, एवरीथिंग्स पार बेस्ट, बट आपने उसको इंडेक्स नहीं करा है या कंसोल नहीं करा है, सो इट इज अ जीरो कंप्लीट। ठीक है। So these are some AI consumer behavior tools that are used, and for us also we can use them as per our business need. Either we can personalize the AI in our own platforms, either we can have the predictive analysis through the um, प्लेटफॉर्म्स या वेबसाइट्स जो एआई के थ्रू रन हो रही है। ठीक है। देर इज वन टूल एसईओ अड्डा, एंड अब उसमें क्या हो रहा है, दे हैव ए एआई प्रिडिक्शंस कि आप एआई के थ्रू अपना प्रिडिक्शन लगाओ कि आपका बिजनेस या वेबसाइट देख के how much customer segmentations can increase or what is the strategy that you can apply to increase it. ठीक है। So chatbots we already have. Chatbots have increasing the potency of developers somewhere. कि development is getting easy with that. Sentiment analysis that it can easily identify. There are 3 4 websites. ठीक है। Even Uber Suggest is also qualifying on this part कि वो sentimental analytics को use कर रहा है. So that it can identify कि अगर आपका website है, so what is the like ratio? It is more of the emotion based या culture based की all of that. Recommendation engines. We have lots of recommendation engines for the working AI में. Suppose आपको image चाहिए with the clear part and you're creating it from scratch, you can go with Sora. And if you're trying to create some different one या उसको rebuild करना, you can try the Gemini. So there are different engines also for ChatGPT or for AI that can help you in creating. Now for customer segmentations also there are different, and every other these are fraud detections के भी different है। जैसे if you go to Palgrism, there is one Cult AI bot, ठीक है। तो उस पे if you type up तो बता देगा। Dynamic pricing के लिए भी there are different paid applications और free applications also that segment out की अगर आप कौन सा pricing रखोगे for your product, you can even show the product images and it will tell you कि अगर आप इतना रखोगे it can increase the sales, अगर आप specific higher amount रखोगे it can decrease or something like that based on the premium productivity. Eventually अगर मानो कि आपका प्रोडक्ट प्रीमियम है एंड आप उसका कॉस्टिंग कम रख रहे हो, सो इट इज अ लॉस फॉर योर ब्रांड ऑल्सो, सो यू हैव टू चेक इट आउट दैट वे। ठीक है। Next comes is the augmented reality, AR, and virtual reality, VR. So augmented reality is something that you are already experiencing on the platforms that is offline. And virtual reality is something that is based on the what you're seeing on of online, right? So brands are experimenting with the AR and VR to create impressive shopping experiences. Virtual try-ons, interactive product demos, and 360-degree product views are expected to enhance the online shopping experiences. Suppose if you're trying to travel somewhere, so travel में जो maps होते हैं, they have been integrated with AI platforms की उधर जाके आप online ही उसका visibility और checking देख सकते हो. This was long back in 2008 जब in libraries this was the performance given कि एक tool होता था that you're putting up a place name, for example Babylon's Garden you have put up या फिर you have put up the Golden Temple in Uttarakhand, ठीक है, और New Vrindavan in Los Angeles, you're putting up all of these names. तो क्या होता है, these names were already registered in that application and they had a 360 view degree every area, मतलब आप आगे गली में जाना चाह रहे हो, if you're going to this stair, so everything was covered in there। ठीक है। covered होने के साथ साथ what happened, people were really curious कि चलो इधर visit करते हैं how it really looks। if they are not going to New Vrindavan, Los Angeles, like it's very far from India, so you can just have a look from it online, and everything was so real, trust me. And this was the product that was given to the computers back in 2008. After that, a long time maps like the Google had this thing taken and they were indexing it, and it took them more than 10 years to make it for every other place. ठीक है। Now, if you go to K2, if you go to Annapurna Mountain, like the deadliest mountain trekking there, if you go to Mount Everest, if you like want to check any other hiking, trekking trails, so everything is very visible. And what does this provide? This provides a real-time experience. Now, a person who is trying to see कि Annapurna is like one of the deadliest and he's thinking to trek it out, उससे पहले उसने करा ही नहीं करा, like whatever it is the thing, and the website that is promoting that feature. So वो क्या करेगा? He will end up customering that website कि I want to go this place
and what are the things needed, what is the contract that I have to do, every detail he'll ask, and क्या हो जाएगा, उस वेबसाइट या उस ब्रांड पे कस्टमर बेस बन जाएगा. So you see the intelligence जो ये cover कर रहे हैं and everything, right? It is a very smooth process actually. Talking about the next, we have blockchain technology and consumer trust. So blockchain से आपको क्या समझ. Blockchain is something related to the technology that holds the potential to revolutionize the trust in digital transactions. Take it. It can provide transparency and securities, particularly in area like product authentications, tracking the ethical codes of the materials. The blockchain is nothing much more. अगर आप digitally देख रहे हो, it is very much if you're looking at a stock sector. But for digital marketing, it means just to maintain an algorithm जहाँ पे bugs ना हो, जहाँ पे स्मूथ ट्रांसपेरेंसी हो एंड जहाँ पे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स बहुत इजी हो ताकि आपका कस्टमर डाटाबेस इधर उधर गलती से लीक ना हो. Like you've already discussed, customers are very specific about their customer database, right? So ethical practices are all supported and helped by the blockchain technologies. Next is about the impact of Generation Z and the future customers. So yes, I have already told you that there are brands like Veda and Cosmans, like ये क्या कर रहे हैं, they are promoting the Gen Z ideas. These generation are like first of the generation that are trying to create things for themselves, trying to get the things for themselves, and they are creating it with the different lovable features, ideas, and everything. So this is what a Gen Z with a good experience and mindset can do if they're trying to indulge themselves in a proper ethical brand practices, right? अगर मानो कि some of the Gen Z is not concerned and they are just working apart with their own interests, तो क्या करेंगे? They will not support any brand. But you being a digital marketer, some of you might be Gen Z, some of you might be working. So क्या होता है? Gen Zs do have a curiosity mindset कि अगर मानो कि मैंने इस campaign को इधर लगाया for this brand and here I'm learning कि इधर ये brand भी exist कर रहा है. So what if मैं इसको लगा रहा हूँ but that campaign is not working for the next brand? What should I do in the alternative sections? What should I add up for the experience to the client कि 101 लगे वो? So everything is being created and shaped differently, and this is creating a better customer behavior experience for the digital part that Gen Zs are actually doing. So yes, this is the final part that we have covered related to all of the workings for the consumer behavior and how we can evaluate it, how we can promote a brand understanding this. And I've given you more of the trends, features, and the case studies also. So now it's your homework to learn about this model, to research about this model more and more, bring in more questions, put in more comments that what you're trying to understand and what you're trying to learn about it. Okay. Bring in some brands that you can tell me कि अच्छा ठीक है इसमें क्या customer experience है या इन्होंने ये चीज change करा down the line after 5 years. So they're experiencing the better results and better strategies, better sales. So yes, sir, you are the one now getting this homework done from your own. And yes, do not forget to comment down your homeworks and your researches. I'll be there watching it all completely. And yes, meet you in the next model, model 4. Bye bye. Take it till then.